हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतन। वेलकम टू आवर न्यूरिक्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में SY BSc कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 4 M2 पार्ट यानी कि ऑपरेशनल रिसर्च देखने वाले हैं। तो उसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 1, सेकेंड वन इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2, थर्ड वन इज द असाइनमेंट मॉडल एंड फोर्थ वन इज द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत लेंदी चैप्टर है। इसमें एग्जांपल्स भी बहुत लेंदी है लेकिन इजी चैप्टर है। नेक्स्ट टू थर्ड चैप्टर्स आल्सो इजी। तो फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 1, तो उसमें हम ये 4 पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शंस का, उसमें डेफिनेशंस है। सेकेंड पॉइंट्स जो है उसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड वन इज द थियोरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, assumptions of linear programming and advantages of linear programming techniques. And next one is the simplex method and BGAM method. So ये 4 पॉइंट्स जो है वन बाय वन हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूनिट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 1। So linear programming is a special branch of wide range of problems included in operations research. Operations research को in short OR भी बोलते हैं। So linear programming is what? Linear programming is in the equations form, जिसमें x1 x2 वेरिएबल्स कंसिडर होते हैं, तो उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है। डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट, linear programming problem is set of optimizing. Optimizing means what? Either minimize or maximize. Is a linear function of variables called objective functions subject to a set of linear equations and or inequalities called the constraints. That means is the linear programming is what? Linear programming में दो फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है, और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स टू लीनियर इक्वेशंस, जो सेकंड होता है वो लीनियर इक्वेशंस है जिसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं आइदर लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये दोनों कॉम्बिनेशंस को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। सैमुअल्सन, डॉर्फमैन एंड सोल defines linear programming as the analysis of problems in which linear functions of a number of variables is to be maximized or minimized when those variables are subjected to number of restraints in the form of linear inequalities. That means these are the scientists Samuelson, Dorfman and Solon, which defines the linear programming. Next, Numba. Numba defines LP, that means linear programming, is the only one aspect of what has been called a system approach to management, wherein all programs are designed and evaluated in terms of their ultimate effects in the realization of business objectives. वन बाय वन टर्मिनोलॉजी हम देखने वाले हैं, जिसका मीनिंग इक्वेशन सॉल्व करने में हमें यूज करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज द लीनियर। Linear is the word linear means that relationship among two or more variables which are proportional directly. The relations among two or more variables. Linear means what? The relationship among two or more variables. Two or more variables means what? The equations is in form of x1, x2 or up to xn. That means these are the linears.
Linear functions means what? C1 x1, C2 x2. That means C1 C2, these are the constant, x1 x2 are the variables, and these combinations is called as the linear functions. Linear functions में क्या होता है? Variables constants का combinations होता है. So next one is the programming. Programming means what? It means that the decisions are made systematically by accepting various alternative course of actions. In short, it refers to process of determining the particular program or the plan of action. That means our programming. Next one is the optimal. Optimal means optimum. That means either maximize or minimize. These are called the optimal. For example, maximization of profits, sales, or minimizations of cost of production times, labors. That means either maximize or minimize. That is called optimal. Next one is the decision variable. The decisions variables x1, x2 up to xn refers to anything that is competing with other decisions variables for limited resources. And the relationship among these variables is linear. That means these are the decisions variables. Next one is the objective functions. Objective functions means what? That means optimizes. That means it contains maximization functions or minimization functions, and it is called as the objective functions. That is the objective functions. Next one is the constraints. Constraints means what? A number of inequalities and or inequalities in terms of decision variables. That means either less than equals to or greater than equals to or equals to. These combinations are called as the constraints. That means the equations are in the form of less than equals to or in the form of greater than equals to or in the form of equals to. And these equations are called as constraints. जो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं उसमें हम बताने वाली हूँ मैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट्स. Then next one is the non-negativity restrictions. Non-negativity restrictions. Non-negativity means what? Non-negativity means always positive. So, assumes the value 0. Non-negativity restrictions may values are always 0. And non-negative, that means it is always greater than or equals to 0. Next one is the feasible solution. Any solution of LPP. LPP means linear programming problem, which is also satisfied the non-negativity restrictions is called feasible solution. That means these are important. Non-negativity restrictions is called feasible solution. Next one is the basic solution. For a set of m equations in n unknowns, that means n is greater than m, solutions obtained by setting n minus m variables equals to 0 and solving remaining m equations in m unknowns is called the basic solution of the system. That means n minus m 0 variables are called non-basic and remaining variables are called basic. These are the basic solutions. N is always greater than m, and n minus m, which is equals to 0, then 0, it is called non-basic, and remainings, it is called the basic solution. Next definition is the basic feasible solution. The base feasible solution, which is also the basic solution, is called basic feasible solution of LPP. Optimum base feasible solution. Any n basic feasible solutions which optimizes objective functions, it is optimum feasible solution. Optimizes, that means either maximize or minimize. Next one is the degenerate basic feasible solution. A basic feasible solution of system of equations is called degenerate if one or more of basic variables are equals to 0. That means these basic variables are equals to 0. That is a degenerate basic feasible solution. And non-degenerate, that means which is not equals to 0. That means remaining non-basic variables are called non-degenerate basic feasible solution. Next one is the unbounded solution. If the value of objective functions can be increased or decreased indefinitely, such solution is called as unbounded solution. These are all terminologies which we have to use to solving the problem. वन बाय वन में इस definitions का मीनिंग बताने वाले हूँ जबकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी. देखो फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी कैसे फॉर्म किया जाता है
इसके बाद में हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट देखो, अनदर डेफिनेशन ऑफ एलपीपी, दैट मीन्स ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। Then z is equals to c1 x1 plus c2 x2 up to cn xn. These are the objective function subjects to linear constraints. Linear constraints mean these are the equations which are either less than or equals to or greater than or equals to. And these equations are in the form of these. This is called the constraints. This z is the objective functions and these are these constraints. So the equations are in the form of this, which is called LPP. So x1, x2 are the decisions variables whose values we want to determine. Z is the objective functions which is maximize or minimize. The inequalities or equations in star is the set of constraints and double star is the non-negative constraint restrictions. These are the non-negative constraints. In star equations, these are constraints, and in double star, these are non-negativity. And all these are contained in the one equations form, which is a LPP form. So one by one हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है। So example is the ready mix produces both interior and exterior paints from two raw materials M1 and M2. That means the raw materials is M1 and M2. Following table provides basic data of problems. So यहाँ पे tons of raw materials and maximum daily availability. So tons of raw material में exterior point है, interior points है. So raw material M1, raw material M2. Yeah, there are two raw materials M1 and M2, which values have been given. So maximum daily availabilities are also given. Profit per tons, these are also have given. Market survey indicates that the daily demand for interior paint cannot exceed that of exterior paints, cannot exceed that of exterior paints by more than 1 ton. Also, the maximum daily demand of exterior paint is 2 tons. Formulate the LPP. दो रॉ मटेरियल्स दिए हैं, यहाँ पे मैं वो चार्ट निकालती हूँ फिर से, जो एग्जांपल में दिया है वो टोन्स ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ पे रॉ मटेरियल M1, रॉ मटेरियल M2। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। सो इसके वैल्यूज है 6, 4, 1, 2, 5 एंड 4। सो यहाँ पे दिया है मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी। सो मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी में दिया है 20 और ये 6। तो इसमें टू रॉ मटेरियल्स दिए हैं M1 एंड M2 and also have given exterior point and interior paints. So यहाँ पे हमें दिया है exterior and interior points. That means let x1 be considered to exterior paint and x2 will consider to interior paint. So exterior paint के लिए हमने x1 कंसिडर किया है और इंटीरियर पेंट के लिए हमने x2 कंसिडर किया है। And also we want maximum, that means maximize the profit. We want maximize the profit. So ये जो है एक्सटीरियर इंटीरियर रॉ मटेरियल्स, इसको यूज करके हमें एक इक्वेशंस फॉर्म करना है।
that means the objective function. The objective function is, the maximize दिया है तो हम maximize लिखेंगे यहाँ पे, maximize z is equals to, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट यानी कि 5x1 plus 4x2. These are the objective functions constraints. Constraints यानी कि जो raw materials हैं M1 और M2. So first equations will be exterior paints and interior paints यानी कि 6x1 plus 4x2. और यहाँ पे ध्यान में रखना है हमें, जबकि मैक्सिमाइज दिया होता है तो उसके लिए हम लेस देन और इक्वल्स टू यूज करेंगे, और जबकि मिनिमाइज दिया होता है तो उसके लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज करेंगे. सो मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट दिया है, तो मैक्सिमाइज दिया है यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू हमें यूज करना है. इसका है 24. और सेकेंड जो इक्वेशंस है वो है x1 प्लस 2x2 मैक्सिमाइज है तो ये हुआ 6. So these two are the raw constraints. These two are the constraints. And next one is what? जो एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है? That interior paint cannot be exceeds that exterior paints cannot exceeds that of exterior paints by more than 1 tone. So यहाँ पे दिया है इंटीरियर पेंट्स कैनॉट बी एक्सीड्स बाय एक्सटीरियर पेंट. इंटीरियर पेंट, इंटीरियर पेंट मीन्स इसको हमने x2 कंसिडर किया है और एक्सटीरियर पेंट्स को हमने x1 कंसिडर किया है, और एक्सीड्स दिया है यानी कि हमने माइनस यूज करना है. मोर देन 1 दैट मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू 1 टोन. And next दिया है maximum daily demand of exterior paint. Exterior paints that means x1. x1 which is maximized that means less than or equals to 2. That means यहाँ पे 4 constraints हैं. 6x1 plus 4x2 less than or equals to 24. x1 plus 2x2 less than or equals to 6. x2 minus x1 less than or equals to 1 and x1 is less than or equals to 2. And last one is the non-negativity constraints, that means x1 is greater than or equals to 0 and x2 is greater than or equals to 0. These are the last non-negativity constraints. So जो इक्वेशंस फॉर्म करना है इन एलपीपी फॉर्म में, तो उसके लिए हमें फर्स्ट मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शंस निकालना है, उसके बाद में हमें कंस्ट्रेंट्स निकालना है, और उसके बाद में हमें नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स लिखना है. सो ये हुआ हमारा एलपीपी फॉर्म, जिसमें फर्स्ट मैक्सिमाइज दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सेकेंड इज द कंस्ट्रेंट्स है, और थर्ड वन इज द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स है. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द example number 2. A company produces 2 types of hats. Company can produce total of 350 hats per day. The market limits daily sales of the first and second types of 150 and 200 hats respectively. Assume that the profit per hat is rupees 8 for type 1 and rupees 5 per type 2, and formulate LPP to maximize the profit. So, second example का answer. So, company produces 2 types of hats. 2 types of hats. So, first type of hat, consider x1. That means let x1 be the type 1 hat and x2 be the type 2 hat.
That means two types of heads considered X1 and X2. Next is the company can produce total of 350 heads per day. So the market limits daily sales of first and second types of 150 and 200 heads. Assume that the profit per head is rupees 8. That means total profit per head is 8 and total per head for type 2 is 5. And formulate LPP to maximize the profit. So the total profit for type 1 hat is rupees 8 and total profit for type 2 of hat is rupees 5. That means objective function will be maximize z is equals to 8x1 plus 5x2. Maximize z is equals to 8x1 plus 5x2. And next, we have given company can produce total of 350 hats per day. Total, that means it is subject to. Total, that means x1 plus x2 will be 350. It will be the first constraints. And next I have given the market limits daily sales of the first and second types of 150 and 200 hats respectively. So that means first one is maximize a, that means less than or equals to a. It will be 150 and x2s will be 200. It will be the third constraints. And last one is the non-negativity constraints. That means x1 is greater than or equals to x2 is greater than or equals to 0. So these will be our formulation of LPP. सो जो कुछ भी एग्जाम्पल में दिया है वो सब कुछ हमें इस एलपीपी फॉर्म में लिखना है. सिर्फ आपको ध्यान में रखना है अगर मैक्सिमाइज हो तो लेस देन और इक्वल टू यूज करना है और मिनिमाइज हो तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज करना है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव. सो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. सो इसमें है थर्ड एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो. A nutrition scheme for babies is proposed by a committee of doctors. Babies can be given two types of foods, first and second, which are available in standard size packets weighing 50 grams. The cost per packet of this food is rupees 2 and rupees 3 respectively. The vitamins availability in each type of food per packet and the minimum vitamins requirements for the each type of vitamins are given in the table below. Formulate LPP to determine the optimal combination of food types with minimum cost such that the minimum requirements of vitamin in each type is satisfied. So we have given vitamins 1 and 2. Here food type 1 and food type 2. So values are given vitamin 1 and 2 में food type 1 is 1, food type 2 is 2, 1, food type 1 is 7 and food type 2 is 1, and also minimum daily required vitamins are 6 and 14 and cost per packet rupees is 2 or 3. So here we have given nutrition scheme for babies is proposed by a committee of doctors. So here two types of foods are given, food type 1 and food type 2. So for food type 1 we have considered x1 and food type 2 we have considered x2. So यहाँ पे हम solution करते हैं. So x1 will be for food type 1 and x2 will be for food type
respectively. So here cost or packet of rupees for food type 1 is 2 and food type 2 is 3. This will be the cost or per packet. So यहाँ पे z यहाँ पे दिया है such that the minimum requirements, minimum that means minimum z is equals to 2x1 plus 3x2. This will be our objective function. So next we have to return constraints for vitamins 1 and vitamins 2. So for food type 1, there are 1 units of vitamin 1 and for food type 2 there are 1 units of vitamin 1. That means food type 1, that means x1, and food type 2 is also 1, that means x2, that means x1 plus x2 and minimum है इसलिए हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज करेंगे. और यहाँ पे कितना मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स दिया है तो यहाँ पे 6 दिया है. और यहाँ पे सेकेंड विटामिन 2 के लिए है 7x1 plus x2 which is greater than or equals to 14. These are the constraints for vitamins 1 and these are the constraints for vitamins 2. And last one is non-negativity constraints. x1 is greater than or equals to 2 or x2 is greater than or equals to 0. And these will be the non-negativity constraints. These are the constraints and these are the objective functions. And from this table, we have given minimum requirements of vitamins. That means we have written in tabular form, for in LPP, that means linear programming problems. This will be the examples of third. Next, example of fourth. यहाँ पे थर्ड का सोल्यूशन हुआ है. यहाँ पे फोर्थ देखते हैं क्या है. सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A firm manufactures 3 products A, B and C. So 3 products है. So first हम 3 products के लिए x1, x2 and x3 कंसिडर करते हैं. So x1, x2, x3 be the number of products A, B, C respectively. A, B, C respectively. So यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है. ए के लिए है ₹3, बी के लिए है ₹2 और सी के लिए है ₹4 respectively. So these will be the profit. So profit है तो ये मैक्सिमाइज होगा. So टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट है total profit is given by z is equals to, so total profit is 3, 2 and 4. So we have written 3x1 plus 2x2 plus 4x3. This is the total profit and total profit है इसमें it will be max z. Now we have to return constraints. Then constraints यहाँ पे दिया है machines G and H. So product is A, B, C. So machine G के लिए है 4 for A, 3 for B and 5 for C. So constraints will be subject to, so यहाँ पे 4 है 4x1 plus 3x2 plus 5x3 और यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो वी हैव रिटर्न लेस देन और इक्वल्स टू साइन. सो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो मशीन जी एंड मशीन एच के लिए प्रॉफिट है machines per minute, that means 2000 and
2500 machines per minute. So G के लिए है 2000 and H के लिए है 2500. So यहाँ पे हम लिखेंगे 2000. और मशीन H के लिए ये कंस्टेंट्स 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 एंड इसके लिए है मशीन्स पर मिनट्स कितना दिया है 2500. So next we have given the firm must manufactures hundreds for A, 200 for B and so no more than 150 for A. So यहाँ पे देखो. So first firm manufactures hundreds A's but not more than C, that means but not more than 150. And firm B manufactures 200s, so it will be greater than or equals to 200s. यहाँ पे देखो firm must manufactures hundreds A's and 200 B's and 50 C's but no more than 150 A's. एक से ज्यादा नहीं है. तो यहाँ पे देखो कैसे लिख रहे हैं हम. So firm manufacture 100 A but no more than 150's 150A's. No more than 150A's. Then we have written 100 which is less than or equals to x1 which is no more than 150. ये हुआ उसका constraints. So next is the second के लिए 200 of B's, that means x2 which is greater than or equals to 200s. And similarly C के लिए है x3 which is greater than or equals to 50. So ये हुआ हमारा formulation of LPP. And last one is the non-negativity constants. x1, x2, x3 is always be greater than or equals to 0. So यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स है A, B, C, तो उसके लिए हमने x1, x2 और x3 कंसिडर किया है. सो टोटल प्रॉफिट है x1 के लिए 3, 2 और 4. सो मैक्सिमाइज Z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3. तो उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं मशीन G और मशीन H के लिए. तो 3 प्रोडक्ट्स के लिए ये 4, 3, 5 और उसका G का टोटल है 2000, इसलिए हमने 2000 लिखा है. और सेकेंड H के लिए 2000 और 500. सो ये फॉर्म में लिखा है. नेक्स्ट कंडीशन दिया है हमें, द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's, 200 B and 50 C but no more than 150 A. 150 A, no more than, that means it will be less than or equals to 150 and it will be manufactures, that means next one is will be greater than or equals to hundreds. And next is the 200 say no more than, that means greater than or equals to 200 or greater than or equals to 50. And last one is the non-negativity constraints. तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखो, एग्जांपल नंबर 5, सॉल्यूशन 5 का. The manager of an oil refinery must decide on the optimal mix of 2 possible blending process of which the input output per productions runs are given as follows. 2 process 1 and 2 input units, output units, यहाँ पे crude A, crude B
एंड गैस ऑनलाइन एक्स, गैस ऑनलाइन बी वाई, उसके वैल्यूज दिए हैं। यहाँ पे दिया है द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ क्रूड ए एंड बी आर 200 यूनिट्स एंड 150 यूनिट्स। यहाँ पे दिया है उसका मैक्सिमम अमाउंट्स and market requirement shows that at least 100 units of gas online X and 80 units of gas online Y must be processed. The profit per productions run from process 1 and process 2 are rupees 300 and rupees 400. So formulate the LPP. So this will be the easy example. यहाँ पे हमें टू प्रोसेस दिया है। सो फॉर प्रोसेस वन के लिए हम X1 कंसिडर करते हैं एंड प्रोसेस टू के लिए X2 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे सो प्रोसेस वन के लिए X1 और प्रोसेस टू के लिए X2 कंसिडर किया है। सो द मैक्सिमम अमाउंट दैट मीन्स मैक्स Z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है टोटल प्रॉफिट 300 यूनिट्स एंड 150। यहाँ पे दिया है टोटल द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ क्रूड ए एंड क्रूड बी आर 200 units and 150 units एंड गैस ऑनलाइन एक्स, गैस ऑनलाइन वाई के लिए ही दिया है 150 और 80, 180। सो 200 प्लस 1000 तो उसका होगा 300। तो उसके लिए 300 X1 प्लस 150 और 80 में होगा सॉरी यहाँ पे लिखना द प्रॉफिट पर प्रोडक्शंस फ्रॉम प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। तो प्रोसेस वन का प्रॉफिट है 300 और प्रोसेस टू का प्रॉफिट है 400। तो मैक्सिमाइज जेड होगा 300 X1 एंड 400 X2। देन इट विल बी सब्जेक्ट टू 5X1 प्लस, सो क्रूड ए फॉर प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू के लिए है 5X1 प्लस 4X2। सो मैक्सिमाइज है इसलिए उसका टोटल है 200 यूनिट्स। और नेक्स्ट है 3X1 प्लस 5X2 क्रूड बी के लिए है 150 यूनिट्स। 3X1 प्लस 5X2 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 150। नेक्स्ट गैस ऑनलाइन एक्स और गैस ऑनलाइन वाई। गैस ऑनलाइन एक्स के लिए प्रोसेस वन के लिए दिया है टोटल 100 यूनिट्स एंड प्रोसेस गैस ऑनलाइन वाई के लिए दिया है 80 यूनिट्स। सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 5X1 plus 4X2. It will be the market shows the at least 100 units. At least दिया है यानी कि मिनिमम। तो इक्वेशन कंस्टेंट्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। तो उसके लिए होगा 100 और ये जो नेक्स्ट है 8X1 प्लस 4X2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। सो ये दो कंस्टेंट्स हुए क्रूड ए और क्रूड बी के लिए और ये दो कंस्टेंट्स हुए गैस ऑनलाइन एक्स और गैस ऑनलाइन वाई के लिए। और लास्ट इक्वेशन होगा X1 ग्रेटर देन 0, X2 ग्रेटर देन 0। सो ये हुआ हमारा नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स। सो यहाँ टेबल में हमें वैल्यूज दिया है। यहाँ पे इनपुट्स के लिए क्रूड ए क्रूड बी है और आउटपुट के लिए गैस ऑनलाइन एक्स गैस ऑनलाइन वाई के लिए है। सो मैक्सिमम अमाउंट दिया है क्रूड ए और क्रूड बी के लिए। तो टोटल है 200 यूनिट्स 150 यूनिट्स। सो प्रोसेस वन के लिए होगा, सॉरी क्रूड ए के लिए होगा 200 एंड क्रूड बी के लिए होगा 150। सो ये मैक्सिमम है इसलिए इसका लेस देन और इक्वल्स टू यूज किया है। यहाँ पे एटलीस्ट दिया है इसलिए हमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये कंस्ट्रेंट्स यूज किया है। सो ये हुआ सॉल्यूशन नंबर 5 का, एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
सो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा एग्जाम्पल नंबर 6 का। सो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या है। अ फार्म इज एंगेज्ड इन ब्रीडिंग pigs. The pigs are on various grown on farm because of need to ensure nutrients constraints, certain nutrient constraints. It is necessary to buy additionally one or two products which we shall call A and B. The nutrients, constituents, vitamins and proteins in each units of the products are given below. So nutrients are given 1, 2, 3, and here two products are given A and B, and here minimum amounts of nutrients are given. So product A cost of ₹20 per units and product B के लिए cost of ₹40. So यहाँ पे देखो, it is possible cost so as to provide the pigs not less than given to the table. So formulate LPP. So यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स है A एंड B. सो प्रोडक्ट 1 के लिए हम प्रोडक्ट 1 के लिए X1 कंसिडर करते हैं और प्रोडक्ट 2 के लिए X2 कंसिडर करते हैं. सो मिनिमाइज यहाँ पे नॉट लेस देन दिया है. सो मिनिमम Z इज इक्वल्स टू, ये टोटल दिया है A और B के लिए. सो 20x1 प्लस 10x2, सॉरी 20, और कॉस्ट B के लिए है 40. सब्जेक्ट टू. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A के लिए है 36.3 और B के लिए है 6 और 12. सो A के लिए, सो इक्वेशंस वी हैव रिटर्न 36 प्लस सॉरी x1 प्लस 6x2 और मिनिमाइज है इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 108. नेक्स्ट 3x1 plus 12x2 which is greater than or equals to 36, and last one is x1 is greater than or equals to 0 and x2 is greater than or equals to 0. So ये हुआ उसका solution. So ये हुआ इक्वेशन नंबर 6 का solution. So next इक्वेशन नंबर 7 का एग्जाम्पल जो 7 है, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो एग्जाम्पल फर्स्ट रीड करते हैं. द मैनेजर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी मस्ट डिसाइड on the optimal mix of two possible blending process of which input and outputs are productions. ये एग्जाम्पल हुआ हमारा. ये एग्जाम्पल हमने ऊपर सॉल्व किया है. यहाँ पे देखो, ये क्रिएड का सेम एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे हमने मिनिमम मैक्सिमम के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. एग्जाम्पल पहले रीड करना है, एक बार नहीं 2 बार रीड करना है एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा लॉस है, किसमें प्रॉफिट दिया है, किसमें प्रॉफिट नहीं दिया है, किसमें मैक्सिमाइज यूज करना है, किसमें मिनिमम यूज करना है, और कहाँ पे हम लेस देन और इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज करेंगे, ग्रेटर देन, और जहाँ पे मैक्सिमम का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हम लेस देन और इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे मिनिमम का है तो वहाँ पे हमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट्स हमें यूज करना है. पहले तो हमें मैक्सिमम सॉरी जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखना है. सो जो प्रोडक्ट दिया है, जो प्रोसेस दिया है, उसके लिए हमें x1 x2 जितने भी प्रोडक्ट जितने भी प्रोसेस है उसके लिए हमें फर्स्ट कंसिडर करना है और उसको यूज करके हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस निकालना है. उसके बाद में हमें सब्जेक्ट टू यानी कि कंस्ट्रेंट्स निकालना है इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एंड लास्ट वन इज द
नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स जो भी हमने कंसिडर किया है x1 x2 x3 उसको हमें नॉन नेगेटिव करना है, दैट मीन्स ऑल आर दिस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 करना है। सो इस वीडियो में हमने डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उस टाइप्स के एग्जांपल्स भी देखे हैं हमने। एग्जांपल्स का यूज करके हमें एलपीपी फॉर्म करना है तो वो भी हमने उस टाइप के एग्जांपल्स देखे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सो अभी हमने इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।